Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund related matters. You can call us on the following three lines: 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. Please prefix 011 if you are calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को प्रसारित करते हैं। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप प्रश्न पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर सीधे फ़ोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। और हेडलाइंस लेके मौजूद हैं ईशान मित्तल। Prime Minister Narendra Modi launches PM Vishwakarma scheme, says Vishwakarmas have been the root of India's prosperity for thousands of years. And foreign investors pump in nearly 2,000 crore rupees into Indian debt markets in the first fortnight of September. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा भारत की समृद्धि में हजारों वर्षों से योगदान कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने सितंबर के पहले 2 सप्ताह में भारतीय डेट बाजारों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। And now the news in detail. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today launched a new scheme named PM Vishwakarma at the International Convention and Expo Center, Yashobhoomi in New Delhi on the occasion of Vishwakarma Jayanti. Mr. Modi also dedicated Yashobhoomi to the nation at Dwarka in the national capital today. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the scheme is a ray of hope for lakhs of artisans and craftspeople who work with hands and tools. The PM dedicated Yashobhoomi to every labor of the country and to every Vishwakarma. He said the Vishwakarmas have been at the root of India's prosperity for thousands of years and said that training, technology and tools are crucial for our artisans. Mr. Modi said today it is the need of the hour to recognize the Vishwakarma partners and support them in every possible way. He said the government is working for the development of the Vishwakarmas. The Prime Minister said under the scheme, Vishwakarmas working under 18 different sectors will be focused and said that the government is going to spend 13,000 crore rupees on the scheme. 18 traditional crafts will be covered under the scheme. Going on, the convention center built across more than 73,000 square meters of area comprises 15 convention rooms and includes the main auditorium, grand ballroom and 13 meeting rooms with a total capacity of 11,000 delegates. The convention center has the largest LED media facade in the country. और इस बीच हमारे 2 श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोलकाता से विकास और मुंबई से संजय। पहले हम विकास का सवाल लेते हैं। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मार्केट मंत्रा जी, सवाल पूछिए। सभी के मेरे नमस्कार। नमस्कार जी। SBI डिविडेंड येल्ड फंड, SBI मल्टी कैप फंड और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ, ये तीनों म्यूचुअल फंड कैसा है, मेरे पोर्टफोलियो में है, आगे क्या करना चाहिए? 10 साल का नजरिया है तीनों पे। देखिए, आपने पहला फंड बोला SBI डिविडेंड यील्ड फंड, ये काफ़ी एक नया फंड है
अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो शायद आपने काफ़ी चांस है एनएफओ के टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। तो देखिए, तो बहुत शुरुआत है, आप अभी निवेश में बने रहिए। एसबीआई जनरली मैं एक ओवरऑल बेसिस पे कह सकता हूँ कि इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, और इक्विटी में इनकी काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजमेंट टीम है। तो इस फंड को समय दीजिए, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अभी कुछ भी बहुत खास कहना इस फंड के बारे में मुश्किल है। एक आपने फंड का नाम लिया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, जो कि इनका ईएलएसएस फंड है, ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। इसमें वैसे ही पैसा 3 साल तक के लिए लॉक इन रहता है। मेरी जानकारी में नहीं है कि आपने कब पैसा निवेश किया था, क्या अभी आप रिडीम कर भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन इस फंड का भी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। तो आप इसमें बने रहिए। अगर आपकी और भी टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप ज़रूर इस फंड को देख सकते हैं। माफ़ कीजिए, तीसरा फंड इन्होंने एसबीआई मल्टी कैप का नाम लिया था शायद, जहाँ तक मैं अगर आपने एसबीआई मल्टी कैप ही था आपका तीसरा फंड, तो ये फंड भी बहुत पुराना नहीं है, 1-1.5 साल हुआ है मेरा ख्याल इस फंड को लॉन्च हुए अभी। तो आपको इसको समय देना पड़ेगा। ये बहुत ही नियर टर्म के निवेश हैं। किसी भी फंड को कम से कम आप 3 साल का समय दीजिए उसका आकलन करने के लिए। And we have our next caller from Mumbai, Sanjay. Sanjay, can you hear us? Hello, sir. Yes, please ask your question. Sir, my question is, should we sell small cap funds now and buy large cap funds in present scenario? Sure. Sanjay ji, of course your observation I believe is stemming from the fact that small caps have done very well in the last 6 to 8 to 10 months, and this year they have significantly outperformed the large cap segment, and therefore your apprehensions or reasons to consider exiting and moving to the large caps in anticipation of some market fall in the near term. I would say that here again, if you try to do that, you are essentially trying to time the market, which can at times be futile, because if nobody can say for sure how long will this rally in the small caps will run, and if they continue to run and you exit right now, then you would have regrets. In fact, equity markets give you a lot of reasons to regret on hindsight, when they are going up or they are going down. The best way to stay away from any such regret or any such dilemma which keeps coming your way from time to time is to focus on your asset allocation. So I would say that small caps have definite role to play in a portfolio, but a supplementary role. Maybe you can assign some weightage to how much you would want to invest in small cap funds. It could be 15%, 20%, 25% of your overall equity allocation, and then try and stay somewhere close to that. Once small caps run up significantly in relation to other market cap segments, such that 20% allocation, let's say, becomes 30%, then suddenly it's time for you to redeem a little bit and restore it back to 20%. Likewise, if small caps fall too far behind and their allocation goes down, then top it up a little bit. So the real needle for you to track is not the markets really, but your own asset allocation, and that will give you very definitive cues in terms of what you should be doing right now. So first decide how much you would want to keep in small caps and be guided by that. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है और एक और सवाल भी है कि जब हम पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो मैंने वैल्यू रिसर्च का पोर्टफोलियो ट्रैकर आजमाया है और उस पर मैं काम भी करता हूँ, और उसमें ईपीएफ को ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि सर हमारे पोर्टफोलियो में भी इस टाइम टोटल 4 फंड हैं। मेरा ही एसेट इमर्जिंग ग्रोथ, पराग पारिक टैक्स सेवर, एसबीआई और एक्सिस स्मॉल कैप। तो क्या ये वेल डाइवर्सिफाइड अपने आप में पोर्टफोलियो है? परसेंटेज वाइज 30% स्मॉल कैप है और बाकी के जो डाइवर्सिफाइड फंड है लिमिटेड कैप और एलएसएस में है। तो क्या इस पे आपके सुझाव रहेंगे? जी, सो पहला सवाल था आपका ईपीएफ ट्रैक करने की। जहाँ तक बात है, वो ऑप्शन शायद आगे आने वाला टाइम में आ जाएगी। धीरे धीरे पोर्टफोलियो में काफ़ी तरीके की इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, शायद आपको वो ऑप्शन भी आगे आने वाले टाइम में मिल जाए। दूसरा आपका सवाल था, आपने 4 फंड के नाम लिए। आपके पास मेरा एक इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है,
SBI का और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड्स हैं। दो चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली, आपकी चॉइस ऑफ फंड हाउसेस और चॉइस ऑफ फंड्स अच्छी है। ये सारे ही फंड हाउसेस ने लॉन्ग टर्म में बेहतरीन परफॉर्म किया है। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में नज़र आता है और आप ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, एटलीस्ट नंबर ऑफ फंड्स के लिहाज में अगर मैं देख रहा हूँ तो आपके पास फंड हाउसेस का रेपिटेशन नहीं है। चारों अलग अलग जो आपके फंड हैं अलग अलग फंड हाउसेस के हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी मुझे मोटा मोटा लगता है कि आप ठीक राह पर हैं। 30% आपने कहा आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में है। थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो वो एग्रेसिव बनाएगा क्योंकि बाकी फंड से भी थोड़ा बहुत स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन आएगा और SBI और एक्सिस स्मॉल कैप तो टोटली आपको स्मॉल कैप्स में एलोकेशन देंगे। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो एग्रेसिव रहेगा, थोड़ा ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में ये वॉलेटिलिटी दिखाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है और ये इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी से आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होती है तो आप बिल्कुल बने रहिए। And moving on to Kolkata, we have our next caller, Animesh. Animesh, please ask your question. Very good evening, sir. Good evening. Namaskar. Namaskar. I have two questions. Yes. Sir, how far mutual fund can assist a retired person? And the second one, how far is it logical for a foreign investor to invest in a mutual fund in our country? Thank you, sir. Sure. To address your first question, of course, mutual funds have investment products which can appeal to a retired person as well. And the idea here is not to look at a retired person in a very straight-jacketed or in a very stereotyped way. The key question is, what are the investing needs of this person? So if after retirement one is looking to derive regular income from his or her investments, then there are certain type of products or asset classes, I would say, which can be created out of mutual funds to suit that requirement. And if even after retirement somebody does not really have an income need from his investments, one has sufficient other sources of income, supplementary income, then for a retired person as well, a long-term mutual fund portfolio should not be different from any other younger investor. So that is how one has to look at it. But for retired persons, I would say particularly for those looking for regular income, the senior citizen savings scheme is a pretty good option offered by the government of India. One should make use of it and combine it with some investments in mutual funds to create a robust regular income portfolio. Your second question about whether foreign investors should invest, again, it depends upon what is the investing need of this person. India has been among the fastest growing economies, and by virtue of that, India is expected to generate returns which could potentially be better than many other economies. And from that standpoint, India continues to be an attractive investment destination for outsiders as well, as much as it is for Indian investors. So and again, the rules of the game are the same. People who don't have a lot of knowledge, time or inclination to track equity markets themselves prefer to take the mutual fund route, and these dimensions continue to apply to any investor. और दिल्ली से हमारे श्रोता ऋषि लाइन पे हैं। ऋषि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मार्केट मक्ता जी। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होल्डर की अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पोर्टफोलियो एक्सेस करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और द सेम क्वेश्चन फॉर इन केस ऑफ डीमैट अकाउंट। थैंक यू। जी, अगर इन्वेस्टमेंट्स पर नॉमिनेशन डली हुई है तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेचीदा या बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड के किसी भी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करिए, उनकी हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए। आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनी के आईडी प्रूफ वगैरह सबमिट करने होंगे, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल या कैंसल्ड चेक देना होगा। नॉमिनेशन अगर है तो वो सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके पैसा या तो वो यूनिट्स नॉमिनी के नाम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा आप निकालना चाहते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप RTA के ऑफिस जा सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर सर्विस सेंटर में बात कर सकते हैं, या उनकी हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करिए। डॉक्यूमेंट जो भी आपको देने हैं, डाउनलोड सेक्शन में म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करना होगा। उसके साथ कुछ ID प्रूफ और बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स नॉमिनी के लगाने होंगे।
डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा होल्डर का, और इन्हीं डॉक्यूमेंट से कुछ ही दिनों में वो पैसा नॉमिनी के नाम हो जाएगा. Moving to Kolkata, we have Atanu Shah. Atanu ji, please ask your question. Good evening. I am Good evening. from Kolkata. Yeah. My question is, what is the qualification of a fund manager inside fund house, a different fund house, please? And what is and why NPS important, National Pension Fund? Thank you. Sure. So as far as the qualifications are concerned, different funds, there is no black and white answer to it. There would be shades of gray. There are fund managers who would have, by professional qualification, done some courses or education which equips them to be able to value in investments and make appropriate investment decisions. So fund managers usually for one are people who have financial qualifications, and then more often than not you would find that they have spent a lot of years tracking markets as an analyst or in different roles before they reach to a level of a fund manager. A fund manager is a position of high responsibility in any mutual fund company, and these people usually come with several years, if not decades, of experience before they assume the role of managing the money of public at large. Ashutosh, building up on a previous answer of yours, you said that some elders who are retired individuals could also look at certain products within mutual funds for a regular income, regular fixed income. Could you elaborate on some of these products? Of course, I know they may be a very range of products, but if you could just give us an idea, a taste of what people can look at. Sure. So the idea, if one is looking to derive regular income after retirement, one of the key misconceptions that people need to get rid of is that after retirement you should not take any risk and all your money should be in guaranteed or fixed income kind of instruments, and that is how the conventional wisdom goes. But the great risk in this thinking is that over long periods of retirement, because even after retirement one could be looking at 20-25 years of post-retirement life, and this is a period, if you completely become risk averse, you can lose out to inflation. Because if your requirement for income today is, let's say, 50,000 rupees a month, and you think by investing in an FD or in fixed income type investments, you will sufficiently be able to generate those 50,000 rupees. That might be true today, but in 5 years from now, that 50,000 rupees will be insufficient. Because of inflation, your requirement of regular income will increase. So what is essential here is that you take a measured dose of risk by adding in a calculated way some portion of your money in equity and keeping the rest in fixed income. Combine these two broad asset classes in a way that the fixed income is able to provide stable regular income, while the equity component provides you with growth which is required over the long term. So the kind of products generally in mutual funds that are suitable are maybe large cap funds or index funds or flexi cap funds in about 30-35% of your allocation to provide that much needed growth. The remaining portion can be in safe and stable kind of mutual fund products like short duration funds or corporate bond funds, which do not take a lot of risk on credit or duration either, and try to manage your money with a high quality portfolio. Once you keep this allocation, then you can perhaps keep transferring a year's worth of income from this allocation to something like a liquid fund or an ultra short duration fund, which are even less volatile and even more safe, and draw your monthly income from that. And every year you can keep rebalancing this allocation, keep shifting some money to liquid funds, and keep deriving regular income. So this kind of an allocation can work potentially for a regular income seeker. और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने सितंबर के पहले 2 सप्ताह में भारत के डेट बाजार में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हालांकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस अवधि में इक्विटी बाजार से लगभग 4800 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे पहले अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का इक्विटी में निवेश 4 महीने के न्यूनतम स्तर 12,262 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था।
इस वर्ष मार्च से अगस्त के बीच 6 महीने तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय इक्विटी में लगातार खरीदारी कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 1,74,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Moving on to Mumbai, we have Keshav calling us. Keshav, please ask your question. या गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग गुप्ता सर। Good evening. मेरा सवाल टर्म प्लान के बारे में है सर। मेरी एज 36 ईयर ओल्ड है, तो टर्म प्लान लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए? ऑनलाइन लेना चाहिए, बैंक के थ्रू लेना चाहिए? ये क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना है। थैंक यू। देखिए, पहला तो आपका डिसीजन काफ़ी सही है। इंश्योरेंस होना ही चाहिए। जो ब्रेड विनर है फैमिली का, उसके लिए टर्म प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर ब्रेड विनर को अनफॉर्चुनेट किसी इवेंट में कुछ हो जाए तो फैमिली के लिए इनकम के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई ना कोई साधन बना रहे। और आपने टर्म प्लान चुना, ये भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इंश्योरेंस में टर्म प्लान इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इंश्योरेंस विच एनीबडी शुड गो फॉर। जहाँ तक ऑनलाइन ऑफलाइन का सवाल है, ऑनलाइन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपका प्रीमियम कम हो जाता है और इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है जिसके लिए कि आपको ऑफलाइन की ज़रूरत पड़े। तो ऑनलाइन आप ज़रूर देख सकते हैं और इसको ख़रीदने का प्रोसेस भी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका आधार कार्ड के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती है, एक आपसे आपकी इनकम की डिटेल्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी केस में हाई वैल्यू सम इंश्योरेंस में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी एक मेडिकल जांच भी कराए अपने खर्चे पर, और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन इफ़ नीडेड, वो आपका टाइम फिक्स करके अपनी एक ऑथोराइज्ड मेडिकल फैसिलिटी में आपको वहाँ जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आपके कुछ बेसिक टेस्ट्स होते हैं और इसके बाद जब आपका टर्म प्लान अप्रूव हो जाता है तो आपको वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू हो जाता है। और चलते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटिश सरकार ने 4 अक्टूबर से वीज़ा शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। ब्रिटेन जाने वाले भारत सहित विश्व के यात्रियों को 6 महीने से कम की अवधि के लिए वीज़ा शुल्क में 15 पाउंड की वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए वीज़ा शुल्क 127 पाउंड महंगा हो जाएगा। शुल्क दरों में यह बदलाव देश के सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में हुई वृद्धि से निपटने के लिए किया गया है। ये वृद्धि वीज़ा की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होगी, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को संसद में कानून के माध्यम से पेश किए गए इन बदलावों के परिणाम स्वरूप 6 महीने से कम समय के लिए यात्रा वीज़ा की लागत बढ़कर 115 पाउंड हो जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन के बाहर से विद्यार्थी वीज़ा के लिए आवेदन करने का शुल्क भी बढ़कर देश में आवेदनों के लिए ली जाने वाली राशि के बराबर यानी 490 पाउंड हो जाएगी। यह समायोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा जुलाई में की गई घोषणा के बाद किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में वृद्धि को समायोजित करने के लिए वीज़ा शुल्क और स्वास्थ्य अधिभार में काफ़ी वृद्धि की जाएगी। And we have our next caller, Santosh from Delhi. Santosh, please ask your question. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जी, जस्ट मुझे ये जानना है कि जैसे कि आईपीओ आते हैं जो मेन बोर्ड के रहते हैं, वो मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट जो है 15,000 से नीचे होता है एक लॉट, लेकिन एसएमई आईपीओ जो होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में होता है अमाउंट। ऐसा क्यों होता है रिटेल के लिए इतना बड़ा लॉट? जी संतोष, हम आपकी आईपीओ से रिलेटेड क्वेरीज में मदद नहीं कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। बट आशुतोष, कंसिडरिंग दैट मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाइज, व्हाट्स योर एडवाइस टू एमएफ इन्वेस्टर्स? आई मीन, हाउ शुड दे नेविगेट दीज मार्केट्स? So my advice and my suggestion would be to go about investing just the way you would do in any other kind of market scenario, whether markets are there at an all-time low or at an all-time high or somewhere in the middle. You have to be guided by your investing needs, your goals, your time horizon, your risk appetite,
And as I was just mentioning some moments back, that be guided by your asset allocation. The most important metric for you to track is your asset allocation and not the market level. And if your asset allocation diverges from your pre-stated one in a meaningful way, then take action and take a course corrective action. Otherwise, don't bother too much. And we wanted to inform our callers, maaf kijiyega, for all queries related to markets or economy, kindly call on Saturday or Monday. Today we are exclusively fielding queries related to mutual funds. Ashutosh, another question that I had to ask you was, the deadline is approaching for nominations or deed registering nominations at mutual funds and Demat accounts. Could you just give our callers an idea about what happens in case they miss this deadline? Do you think there will be another extension, or what happens? See, extension or not, the idea is that nomination is a very important part of investing, be it mutual funds, be it any kind of investment or asset, financial asset that you might be holding. So consider this as a wake-up call. Put your nominations in place if you have not already. Numbers suggest that there are thousands of crores of rupees lying unclaimed in different kind of investment products, where the government and the regulators have been actively trying to figure out who are the rightful owners of this money so that it can be returned. And one of the reasons why there is such a big accumulation of unclaimed money is because of the want of nominations. The passing of this money to the legal heirs or the rightful owners could not happen, and therefore a lot of this money got lost somewhere in between. In the unfortunate event that something happens to the investor, everybody wants that their savings, their investments can be passed on to their family members in as hassle-free a manner as possible, and nomination is a great step to achieve that. So it is a great initiative by SEBI to put nominations, although in mutual funds you have the option to either nominate someone or opt out by saying that I don't want to nominate, but you have to do one of those things manually. Despite having that option, it is highly recommended that you nominate someone. It is an extremely good and an extremely well-intentioned initiative, and you should make use of it. आशुतोष जी, जैसे कि अभी हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय के बाद इक्विटी में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दिया है, तो इस गिरावट का आप किस तरह का असर म्यूचुअल फंड सेगमेंट पे देखते हैं? देखिए, ट्रेडिशनली अगर हम देखते हैं तो विदेशी निवेशकों का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन मार्केट्स पर. जब भी विदेशी निवेशक पैसा लगाते थे या पैसा निकालते थे, उसका असर मार्केट के उतार चढ़ाव में काफ़ी देखा जाता था. लेकिन पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफ़ी वज़न मार्केट में बढ़ा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स अब बहुत ज़्यादा हैं और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर वेट के रूप में उभरे हैं. तो जो पहले इन्फ्लुएंस था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो अब नहीं है. और क्योंकि SIP का एक जो ट्रेंड चल पड़ा है, लगातार लोगों का पैसा आता जाता है और वो लगातार निवेश होता रहता है, तो पिछले कुछ टाइम में हमने ये भी देखा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल भी रहे हैं तो मार्केट उस तरह से नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था. वो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगातार इस टाइम पे भी मार्केट्स में निवेश होता रहा है. तो वो इन्फ्लुएंस अब कम है और ये मार्केट्स की रेजिलियंस के लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. जी आशुतोष जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. जी धन्यवाद. Before we close, a reminder of the headlines. PM Narendra Modi launches the Prime Minister Vishwakarma scheme, says Vishwakarmas have been the root of India's prosperity for thousands of years. Foreign investors pump in nearly 2,000 crore rupees into debt markets in fortnight of September. That's it in this edition of Market Mantra. Market Mantra.
This is Akashvani. The news